Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I am Chinmay, a final year medical student. I often reflected on the fact that every medical professional was once a student who doubted themselves. And this channel is all about that. I am sharing what I learned or have learned in my life that can potentially help you in yours. I have decided that we will start with the topic which is very close to me, that is heart. And we will start with cardiovascular system. And I hope this channel finds you well and you enjoy the learning along the way. Hi, to understand the medicine part and the pathology part of CVS, we need to understand the normal functioning first, and that is physiology. अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो तीन चीजें आती है उसमें. What are the three things that we deal here? First is blood. Blood के बारे में हम hematology में भी पढ़ते हैं. Then comes the vessels, blood vessels, which are arteries and veins and the microcirculation. And third is the core, that is the heart. Before jumping into these three topics, let's talk about what is the functioning of CVS. What are the functions of CVS? To remember all the functions, I made a trick called MTP. MTP stands for medical termination of pregnancy. You can remember it by that. Okay, so M here stands for metabolic. What are the metabolic function of CVS? So basically क्या transport करता है ये? O2, nutrition. Okay. Then what does T stands for? T stands for thermoregulation. It maintains the body temperature. How does it do that? It takes the help of hypothalamus for that, and it's a topic in itself. So what does the P stands for? P stands for pulsatile flow. ब्लड जो है हमारी बॉडी में वो पल्सेटाइल फ्लो में मिलता है, मतलब पल्स में बहता है. ओके, एंड देन देयर इज अ प्रोग्रेसिव pressure drop which helps in exchange and diffusion and transport drop. Okay, then W stands for waste disposal. It takes the waste material towards the kidney. Then comes hormones. It also helps in transport of the hormones. Okay, so these are the functions of the CVS. Now question rises ki what happens if the heart stops suddenly? What would happen? All of these functionings will stop. Okay, so what do we need to do at that moment? हमें क्या करना है? हमें एक ही चीज करना है, that is chest compression. So we do external chest compression. Okay, now what will happen in that? This is a part of cardio pulmonary resuscitation. Okay, so why do we do chest compression? हम chest compression इसलिए कर रहे हैं ताकि जो blood हार्ट स्टॉप हो चुका है, जो ब्लड हार्ट के अंदर बचा है, इट कम्स आउट एंड इट स्टार्ट्स अगेन फ्लोइंग थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है, सो वी डू एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन इन ऑर्डर टू bring the person back, bring the heartbeat back. Okay, so coming back to blood, the blood is a transport medium in our body. What does it transport? It transports oxygen, it transports the nutrients, it also transports the hormone. Okay, now there are two types of circulation that exist in our body, that are systemic and pulmonary. What are the differences between them? जो सिस्टमिक एंड पल्मोनरी आपके पास सर्कुलेशन है, उसके अंदर मेजरली 3 डिफरेंसेस है. पहला, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है इन सिस्टमिक, अराउंड 120/80, दैट इज डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक ओवर डायस्टोलिक, एंड हियर इट इज लो कंपेयर टू सिस्टमिक, अराउंड 25/8. The resistance is high here, resistance is low here. Okay, now there is a constant vasoconstrictive tone present in systemic circulation, but it is not present in pulmonary circulation.
Now there is one interesting thing that happens when there is a hypoxia. What is hypoxia? मतलब basically अगर ऑक्सीजन कम हो जाता है ब्लड लंग्स के पास, so there is an interesting thing that happens. जो आर्टीरियल्स लंग्स में प्रेजेंट है, तो बेसिकली अगर हाइपोक्सिया होता है तो वेजो डायलेशन होना चाहिए, डायलेट होगा तब मोर ऑक्सीजन पहुंचेगा वहां पर, करेक्ट? टेक्निकली वो होना चाहिए था, बट इन केसेस ऑफ लंग इट इज अ स्पेशल इफेक्ट, अ स्पेशल फिनोमेना दैट हैपेंस. जो आर्टीरियल्स है वो वेजो डायलेट होने की बजाय वेजो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. व्हाई डज दैट हैपन? दैट हैपेंस बिकॉज ऑलरेडी वहां ब्लड नहीं पहुंच रहा है, सो वी नीड टू ऑक्सीजनेट द आर्टीरियल्स कंटेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट? हमें लंग्स में से ऑक्सीजन चाहिए. सो वेजो कंस्ट्रिक्ट होने की से क्या होगा, वो अपना पाथ चेंज कर लेगा, blood will change its path. So when the path of the blood is changed, it will go where the oxygen is high, and that will result in high ventilation perfusion ratio. So that happens only in lungs, arterioles of the lungs. Okay, now let's talk about blood vessels. What are the types of blood vessels we know of? One is the main arteries and the veins. Then comes the microcirculation. अब माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर क्या क्या आता है? माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर आता है आर्टीरियोल्स, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट देम ब्रीफली. तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं. अब आर्टरीज हमें पता है कि वो ब्लड कहाँ से ले जाती है. तो ऑब्वियसली इट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी विच कंटेन्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. So it takes the blood away from the heart, from heart to the whole body. ठीक है, obviously contain oxygenated blood except the exception. Okay, so what are the layers of artery? This is the important part. तो आर्टरी के 3 लेयर होते हैं: ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया. अब इसमें इंपॉर्टेंट वन कौन सा है? इसमें मेन इंपॉर्टेंट वन है ट्यूनिका मीडिया. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये थोड़ा थिक होता है. ठीक है, इसमें होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. Now this sympathetic nervous system helps in what? Vasoconstriction and vasodilation of the arteries. इसकी वजह से arteries जो है dilate कर सकती है और constrict कर सकती है. Okay, so let's talk about Windkessel vessel. Before going into that, पहले हम बात करते हैं सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है. So जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है that is known as systole, and when the heart relaxes that is diastole. सिस्टोल जब होता है तो ब्लड स्क्वीज आउट होता है एंड रिलैक्सेशन में हार्ट के अंदर ब्लड आता है. लेकिन कुछ वेसल्स होती है, लार्ज वेसल्स, जो बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है. अब हाउ डज दैट मैटर टू अस? एग्जांपल के लिए अओर्टा. अब ये ज्यादा इलास्टिक है तो इसमें होता क्या है? सिस्टोल के अंदर इसमें ब्लड कलेक्ट हो जाता है एंड डायस्टोल में ब्लड रिकॉइल बैक हो जाता है. The same phenomena also happens in pumps and the water, as basically heart is also pumping a blood. Okay, so this is known as Windkessel's vessels, जो aorta होता है और जो large arteries होती है. Next, what is it a major site for? Major site for atherosclerosis. What do you mean by atherosclerosis? Basically जो plaque collection होता है, कोलेस्ट्रॉल का कलेक्शन या प्लाक कलेक्शन इन द आर्टरीज, तो ये मेजरली आपको आर्टरी के अंदर दिखेगा. देन एन्यूरिज्म हैपन इन आर्टरी. व्हाट एल्स? व्हाट इज आर्टरीज स्पेशल फॉर? ब्लड प्रेशर हम लेते हैं आर्टरी में, हम पल्स लेते हैं आर्टरी से. ओके, हाउ डू वी टेक ब्लड प्रेशर, हाउ डू वी टेक पल्स, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक इन इटसेल्फ. ओके, देन नेक्स्ट कम्स आर्टीरियल्स. अब आर्टीरियल्स के अंदर क्या होता है? उसके अंदर कंट्रोल वॉल्व्स होता है. कंट्रोल वॉल्व से बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इज प्रिवेंटेड.
सो आर्टरीज जो है वो आगे जाके टर्मिनेट होती है इनटू आर्टीरियल्स, उसके अंदर वॉल्स है। यहाँ पर मैक्स रेजिस्टेंस होता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रेजिस्टेंस वेसल्स। ओके, नाउ इट एंड्स इन मेटा आर्टीरियल्स, आर्टरीज, आर्टीरियल्स, मेटा आर्टीरियल्स। अब मेटा आर्टीरियल्स से पहले यहाँ पर इनके पास होता है प्री कैपिलरी स्पिंक्टर। ओके, नाउ व्हाट इज आर्टीरियल्स बेस्ट साइट फॉर? सबसे पहले तो रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर ज्यादा। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो मीन आर्टीरियल प्रेशर इज हाई, यो दिस इज द बेस्ट साइट फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन आर्टीरियल प्रेशर। नाउ जो मेडिकेशन होती है आपकी हाइपरटेंशन की, बीपी की, हाई बीपी की, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली आर्टीरियल्स पे काम करती है। ओके, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती है वो थिन वॉल्ड होती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एक्सचेंज वेसल्स। यहाँ पर एक्सचेंज होता है, बहुत थिन वॉल्ड है तो एक्सचेंज होना आसान होता है। यहाँ पर मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, नाउ कैपिलरीज के में अंदर एक फोर्सेस एक्ट करती है, दैट फोर्सेस इज नोन एज स्टर्लिंग फोर्सेस। स्टर्लिंग फोर्सेस के अंदर क्या क्या आता है? एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आता है, एक ऑन्कोटिक प्रेशर फोर्स आता है। वो बैलेंस मेंटेन होता है इन दोनों फोर्सेस के बीच में। अगर इनके बीच में डिसबैलेंस हुआ तो ब्लड जो है वो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में escape आउट हो जाता है, स्क्वीज आउट हो जाता है। दैट इज बेसिकली edema. And when does this happen usually? When does edema happens? या तो सेप्सिस है, या आपको आपका किडनी फेलियर है, सेप्सिस है, edema है, तब आपकी स्टर्लिंग फोर्सेस इन कैपिलरीज ये हो जाती है। इट इज ऑल्सो ऑफन रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू डायबिटिक माइक्रो एंजियोपैथी। ओके, देन नेक्स्ट कम्स द कैपिलरी रीफिल टेस्ट। एक टेस्ट है कैपिलरी रीफिल टेस्ट, वो हम करते हैं परफ्यूजन जानने के लिए इन इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी में हमें परफ्यूजन जानना है देन वी डू दिस कैपिलरी रीफिल टेस्ट। ओके, देन नेक्स्ट कम्स द वेन्यूल्स। अब आर्टरीज था, आर्टरी से आर्टीरियल्स में गया, उससे मेटा आर्टीरियल्स में गया, देन इट कम्स टू द कैपिलरीज जहां पर एक्सचेंज हुआ। अब वेन्यूल्स के अंदर क्या होगा? वेन्यूल्स विल कलेक्ट द ब्लड अगेन एंड इट विल डिलीवर इट टू द वेन्स। सो मेन इसका काम क्या है? वेन्स को डिलीवर करना। ओके, एंड वैस्कुलर डैमेज कहाँ देखने को मिलेगा? इसके अंदर डैमेज आपको देखने को मिलेगा इन सेप्सिस। बट इसके अलावा भी इसका एक मेन फंक्शन होता है। दिस इज अ प्राइमरी साइट फॉर डायापेडिसिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायापेडिसिस? अब डायापेडिसिस का मतलब ये होता है जब इन्फ्लेमेशन होता है, व्हेन बॉडी इज इन acute और chronic inflammation, WBC goes towards the pathogen. ओके, सो दैट स्क्वीजेस आउट। तो जो आपकी आर्टरीज है, आर्टरी के अंदर WBC, जो आपकी वेसल्स है उसके अंदर आपके WBC होते हैं, WBC स्क्वीज आउट होके बाहर जाते हैं इन द इंटरस्टिशियल स्पेस टू रिलीज द इंटरन्यूकिन्स टू किल द पैथोजन। ठीक है, एंड दैट यूजुअली हैपेंस इन दिस venules. Okay, then the last part is the veins. अब जो veins है they are the major reservoir. ये मेजर रिजर्वायर होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज कैपेसिटेंस वेसल्स। और इनमें होते हैं वॉल्व्स। अब ये वॉल्व्स क्या हेल्प करते हैं? इट हेल्प्स इन यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना है। कौन सा डायरेक्शन है वो? हमें हार्ट के पास लेके जाना है। व्हाट इफ द ब्लड फॉल्स बैक एंड अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है, जब वो हार्ट के पास जाता है, सो उसके ऊपर ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। टू काउंटर दैट वी हैव वॉल्व्स, सो it helps in taking the blood in unidirectional flow. And there are some clinical diseases which is related to veins that we need to know. One is this, यहाँ पर क्या होता है कि ये tortuous हो जाती है veins becomes little tortuous and they dilate. ये condition को हम बोलते हैं varicose vein,
यहाँ पर पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाता है. इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज सर्जरी. ओके, सो इन वेरिकोज वेन्स आपकी जो वॉल्व्स है वो ढंग से काम नहीं करते, विच कॉजेज द पूलिंग एंड विच रिजल्ट इन पूलिंग ऑफ ब्लड एंड टॉर्चुअस वेन्स. The next thing which is important and clinically important for veins is deep vein thrombosis. अब deep vein thrombosis क्या होता है? अगर normal healthy valves हैं तो वो normal functioning करेंगे, but if there is some pathology in the valves तो वो थोड़े bend हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर pooling of blood हो जाएगा. अगर वहाँ पर pooling of blood हुआ उसकी वजह से वो blood collect होने लग जाएगा, which will cause formation of a clot. ठीक है, a clot will form. अब ये clot जो है that can take the place of an embolus. अब what is the difference between a clot and an embolus? तो जो embolus होता है, तो जो clot होता है वो dislodge नहीं होता, वो वहीं रहता है, वो clot होके वहीं पर रुक जाता है. But the embolus can move around. It can move around. And as it can move around, ये different body parts में जा सकता है. अगर ये heart की तरफ गया तो it can block the heart का blood supply. It goes to the brain, it can block the brain का blood supply. And if it travels to the lungs, it can cause pulmonary embolism. So that is very dangerous condition for us. Okay, now let's jump to the main core topic, which is heart. Okay, in order to understand heart, we need to understand its basic anatomy first and its location. So heart आपका कैसा organ है? Heart is आपका hollow organ. It's hollow muscular organ. Okay. Now what is its size? It is the size of a clenched fist. Clenched fist. ये size का होता है. Okay. Now heart जो होता है वो थोड़ा सा shifted होता है from the mid sternal line. So it is 2/3 shifted to left from mid sternal line. Mid sternal line. Now what is interior of heart? Interiorly क्या होगा आपका? आपकी होती है ribs आएंगी, sternum आएगा, ribs नहीं, आपका sternum आएगा and आपके costal cartilages आएंगे. Okay. Now posteriorly क्या देखने को मिलेगा? Posteriorly आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी. One is esophagus, T5 to T8 आपके vertebrae, then you will see primary bronchi, trachea. All of this is in the posterior side of the heart. Okay, laterally क्या मिलेगा? Laterally of course हमें मिलेगा lungs. This is the general basic anatomy position of the heart. Okay, now let's talk about the layers of the heart. So what we will do, we will take a section from this and then we will see the layers. Here we have taken a section and now we are talking about what are the layers of the heart. There are basically three layers. First is epicardium, the outermost, myocardium, the middle, and the innermost, that is endocardium. We will talk about from inner to outer as we discuss this. So the first layer that we will discuss is endocardium. अब एंडोकार्डियम जो है उसके अंदर के कौन से टाइप का टिश्यू होता है? इसमें हमारे पास होता है सिंपल स्क्वामस एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. Now what is the function of the endocardium? It acts as a barrier between what? Barrier between the heart muscles and the blood. Okay, it acts as a barrier. It also releases something very interesting. What does it release? It releases PgI2 and nitrous oxide. अब how does this concern us? ये रिलीज करते हैं तो क्या हुआ? ये रिलीज करने से बेसिकली ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन
and inhibit platelet activation. अब इससे क्या होता है, clotting नहीं होता. So it inhibits the aggregation and collection of platelets and also inhibits the activation of the platelets. Okay, so what will happen if infection of this layer happens? अगर ये लेयर पे इन्फेक्शन होता है तो उससे क्या होगा? Okay, so उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडोकार्डाइटिस. इसके हमारे पास क्लासिक दो एग्जाम्पल है, दैट इज रूमेटॉइड हार्ट डिसीज एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. दीज आर द टू क्लासिक एग्जाम्पल. अब इन्फेक्शन में होगा क्या? रूमेटॉइड हार्ट डिसीज में आपकी जो वॉल्व्स हैं वो आपके काम नहीं करेंगे. अर्ली स्टेज में रिगर्जिटेशन होगा ब्लड का, ब्लड फ्लो करके वापस पीछे जाएगा, और लेट स्टेज पे यहाँ पर स्टेनोसिस हो जाएगा. ओके, देयर इज ऑल्सो क्लासिक अपीयरेंस, फिश माउथ अपीयरेंस देखने को मिलेगा, फिश माउथ अपीयरेंस या बटन होल अपीयरेंस. ठीक है, ये देखने को मिलेगा व्हेन रूमेटॉइड हार्ट डिसीज हैपेंस. देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड मैकैलम्स पैच देखने को मिलेगा, मैकैलम पैच. We will discuss all of this when we will discuss the pathology part of CVS. ठीक है, नेक्स्ट इज एंडोकार्डाइटिस. यहाँ पर सॉरी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. यहाँ पर आपका जो है ये कलेक्शन हो जाता है ऑन द वॉल्स, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर सब टाइप्स ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. 4 सब टाइप्स होती है. ठीक है, वी विल डिस्कस दैट इन अनदर वीडियो. ओके, चल we'll go back to the layers. What is the next layer? Next layer is myocardium. So there are two parts of myocardium. Myocardium also has two parts. First part of the myocardium is the contractile part. Okay. The next part is non-contractile. So what is contractile and what is non-contractile? तो basic function क्या है myocardium का? Myocardium का main function है आपकी हार्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना. बट उसके अलावा वहां पर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल जो पार्ट है उसका जो फंक्शन है वो है टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, द नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट कंडक्शन एंड द एक्शन पोटेंशियल. सो वी विल डिस्कस व्हाट इज द नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट का फंक्शन इन दैट पार्ट. ओके, सो व्हाट आर द मेन फंक्शंस टू लिस्ट. सबसे पहले आपका फंक्शन क्या हो जाता है यहाँ पे? जनरेशन ऑफ एपी. व्हाट इज एपी? एक्शन पोटेंशियल. इसके अलावा when it is stretched it releases something. What does it release? What does it release? It releases two things. One is anti natriuretic peptide and brain natriuretic peptide. अब इससे होगा क्या? ये जो होता है जब भी मायोकार्डियम स्ट्रेच हुआ, ज्यादा वॉल्यूम आया, तो ये दो पेप्टाइड्स निकलते हैं. ये जो पेप्टाइड्स है इट कॉजेस एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन कराते हैं ऑफ Na+ एंड H2O. ठीक है, जब इन दोनों का एक्सक्रीशन होता है बॉडी से तो उससे ब्लड वॉल्यूम जो है बेसिकली वो डायलेट हो जाती है वेसल्स. जो वेसल्स डायलेट होगी ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, जो स्ट्रेच है वो कम हो जाएगा. सो बेसिकली इट्स अ स्ट्रेच reflex that happens to maintain the blood pressure also. It also helps in maintaining the blood pressure. Okay, so what would happen if the supply is decreased? किसका सप्लाई? ब्लड का सप्लाई इज डिक्रीज्ड. ब्लड का सप्लाई अगर मायोकार्डियम को नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ठीक है, सो इफ ब्लड का सप्लाई, द सप्लाई इज डिक्रीज, तो हार्ट को ही अगर ब्लड नहीं मिल रहा है पंप करने के लिए, दैट देन दिस कंडीशन इज नोन एज मायोकार्डियल infarction. Okay, then what happens if the muscle is weak, myocardium is weak? That condition is known cardiomyopathy.
When it is inflamed, it is known as myocarditis. Okay, so these are the clinical stuff related to myocardium. Next comes the epicardium. Epicardium is also known as visceral layer of serous pericardium. Now what does this mean? So हमारी दो लेयर हमने बात करी, एंडोकार्डियम के बारे में बात किया, हमने मायोकार्डियम के बारे में बात किया, एक होता है पेरिकार्डियम. अब पेरिकार्डियम जो है उसकी तीन लेयर्स होती है. कौन कौन सी लेयर? जो आउटर मोस्ट होती है दैट इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम. इनर लेयर जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है. वन इज पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम. सो बेसिकली जो पेरिकार्डियम है दो में डिवाइडेड है. पहला है फाइब्रस, दूसरा है सीरस. जो सीरस है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू. वन इज विसरल एंड वन इज पेराइटल. ठीक है, जो विसरल वाला है दैट इज ऑल्सो नोन एज एंडोकार्डियम, सॉरी एपिकार्डियम. ठीक है, व्हाट इज इट्स फंक्शन? मेन फंक्शन इन तीनों का मोटा मोटा सेम ही है, टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द हार्ट. ठीक है, इट ऑल्सो एक इसका जो है एक स्पेशल फीचर और है कि इट रिलीजेस व्हाट? पेरिकार्डियल फ्लूइड. पेरिकार्डियल फ्लूइड. ठीक है, इसका एक और फंक्शन है, अ पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम. नाउ ये लेयर्स के बारे में बात हुआ. अब इन दोनों लेयर्स के बीच में एक कैविटी होता है, दैट कैविटी इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी. ठीक है, अब पेरिकार्डियल कैविटी जो होता है वो दो लेयर्स के बीच में होता है. यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज. यहाँ पर जो है ये फ्लूइड प्रेजेंट है, दिस फ्लूइड, दिस पेरिकार्डियल. ठीक है, अब ये फ्लूइड कितना होता है हमारी बॉडी में? अराउंड 15 ml प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन. सो बेसिकली एक कुशनिंग का काम होता है. जो लेयर्स होती है आपस में एक दूसरे के ऊपर रब होती है व्हेन इट हार्ट एक्सपैंड्स एंड रिलैक्सेस. इट हेल्प्स इन द प्रिवेंटिंग द फ्रिक्शन बिटवीन देम. अब the next thing, what will happen if to this fluid if the fluid is decreased? अगर डिक्रीज हो गया फ्लूइड, ठीक है, तो उससे चेंज क्या होगा? उससे इंक्रीज हो जाएगा फ्रिक्शन. ठीक है, दैट विल कॉज अ स्टैबिंग पेन इन द चेस्ट. स्टैबिंग पेन लगेगा इन द चेस्ट. व्हाट विल हैपन इफ इट इज इंक्रीज्ड? अगर ये इंक्रीज हो गया तो डिक्रीज इन फ्रिक्शन हो जाएगा. ठीक है, decrease in friction can also lead to impaired filling. Impaired filling. Now this impaired filling can lead to cardiac tamponade. Now what is cardiac tamponade? Basically ज़्यादा fluid हो गया यहाँ पर, as you can see यहाँ पर ये ज़्यादा fluid हो गया. Due to this इसके अंदर new blood जो enter कर रहा है वो restrict हो रहा है. So it's causing a pressure. ठीक है, it's not able to relax properly, so it's not able to pump properly the blood. That condition is cardiac tamponade. So what would be the treatment? Treatment would be to remove the extra excess fluid. How can you do that? एक injection लेंगे and then we will suck that out. What is that process known as? That process is known as pericardial synthesis. Okay, so when you take the fluid out, the heart will get a proper space to expand and cardiac tamponade will get resolved. It's an emergency procedure and it's life threatening as well. Okay, impair filling hota hai. Okay, then the next topic is basically about heart. I love drawing the diagram of heart whenever I get time or I'm free. I love to draw heart. It's very easy. Okay, so first we'll talk about the chambers. What are the total chambers? There are total 4 chambers. We all know that. Okay, which contains 2 atria and 2 ventricles. There is also auricles. Auricles basically ऊपर का एक soft pouch like space होता है, ठीक है, which is present over the atria. That is auricle.
Okay, so let's mark here. This is the diagram. This is atrium, atrium. This is ventricle. This is ventricle. Okay, auricle उसके ऊपर होगा. This is the cut section of the heart. This is a cut section. Okay, next coming back. Right atrium. अब right atrium के अंदर we know there is deoxygenated blood. अब वो deoxygenated blood कहाँ से आता है? वहाँ वो 3 जगहों से आता है. One is superior vena cava, जो above the heart जो भी level होता है वहाँ से blood लेके आती है. Then there is inferior vena cava. Okay. Then there is coronary sinus. So the coronary sinus जो होता है, that is a landmark. What is it landmark for? It is landmark for cardiac catheterization. Cardiac catheterization. It is also a landmark for pacemaker installation. What is pacemaker? We will discuss in the next video when we will talk about the conduction system of the heart. Okay, the next topic or the next part of right atrium is fossa ovalis. Now what is fossa ovalis? Fossa ovalis is a remnant of foramen ओवल. जब बेबी मदर के वूम में होता है तब उसके लंग्स फंक्शनिंग नहीं होते. So there is no need of the blood to go from right atrium to right ventricle, then from the pulmonary circulation and come back. So there is no need for that. ठीक है. Fetus lungs are not functioning. ठीक है. तो what does foramen oval does? It bypasses that circulation, and the blood is directly transported towards the circulation of the baby, like the systemic circulation. Okay, so pulmonary circulation is bypassed. Okay, what will happen if this is patent? What is patent? Fossa ovalis patent. Basically वो fill हो जाना चाहिए, उसका remnant foramen oval fill हो जाना चाहिए and fossa ovalis बन जाना चाहिए. But अगर वो patent रहता है, what will happen? It would be two conditions that can happen. That is paradoxical embolism and transient ischemic stroke that can happen. Okay, okay, now let's mark them. This is right atrium. Okay, this part is fossa ovalis. Okay, this is coronary sinus. This is superior vena cava. This is inferior vena cava. Okay, so these are the part of right atrium. Next we go to the left atrium. Left atrium जो है उसमें से the main only thing that happen in left atrium is like the further part of left atrium is 4 pulmonary veins that come. ठीक है. So 4 pulmonary veins होती है. Pulmonary vein. This is left atrium. Okay, so there is 4 pulmonary veins. It diverges and it goes from the two goes to the left lung and another 2 goes to the right lung. Okay, this is also pulmonary vein. Okay, next auricle. Auricle mainly आपका function क्या करता है? ये increase करता है आपका space and volume. As I told, it's out pouching. It's a pouch which helps the increase in space and volume. Okay, अगर कभी atrial fibrillation हुआ, atrial fibrillation is a heart condition, अगर वो हुआ तो थ्रोम्बस होता है. अब थ्रोम्बस जो होता है वो लेफ्ट ऑरिकल में आपको ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू राइट ऑरिकल. दिस इज जस्ट अ फैक्ट. ठीक है. नेक्स्ट कम्स वेंट्रिकल. देयर इज अ राइट वेंट्रिकल एंड अ लेफ्ट वेंट्रिकल. वेरी इजी पीजी. ठीक है. अब वेंट्रिकल के अंदर और व्हाट डू यू नीड टू नो? देयर इज अ सेप्टम. ठीक है. दैट सेप्टम व्हिच सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट is known as interventricular septum. Okay, अब वो सेप्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? उसका मेन फंक्शन ये होता है कि वो ओवरराइडिंग नहीं होने देता. लाइक देयर इज अ differentiation between oxygenated
एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, तो उसमें एक डिफरेंस मेजर करके रखता है, ठीक है। इसके अलावा उसमें से जाता है क्या, उसमें आपका जाता है बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, अगेन वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हेन वी विल टॉक अबाउट द कंडक्शन पार्ट, ठीक है। बंडल ऑफ हिस इसमें जाता है। अब जो डिफेक्ट है, मैक्सिमम डिफेक्ट इसी सेप्टम में देखने को मिलता है, ठीक है, दैट डिफेक्ट इज नोन एज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप है आपका, जिसके अंदर होगा क्या, लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो जाएगा, लेफ्ट से ब्लड राइट में चला जाएगा। ये बेसिकली आपका कौन सा एनॉमली हुआ, आपका जो हेरिडिटरी है, आपका जो बचपन से जो एनॉमली है, हार्ट कंडीशन हो सकता है, दैट इज वीएसटी, वो आपको वेंट्रिकुलर सेप्टम में दिखेगा। नाउ लेट्स जस्ट मार्क दैट ऑन द डायग्राम, दिस इज वेंट्रिकुलर सेप्टम, दिस इज राइट ventricle, this is left ventricle. I always used to get confused between कौन सा साइड राइट है, कौन सा साइड लेफ्ट है, so always remember left hand side when you're drawing it on copy or a book, जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज द राइट, और जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम मार्क कर दिया, ऑरिकल मार्क कर दिया। नेक्स्ट कम्स द वॉल्स ऑफ हार्ट। सो वॉल्स ऑफ हार्ट जो है, हमारे पास 4 वॉल्स होते हैं विच कंट्रोल द ब्लड फ्लो इन द हार्ट पूरा, ठीक है। बिफोर गोइंग इनटू दैट हमें उसका स्ट्रक्चर समझना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे समझेंगे हम, स्ट्रक्चर जो है इसका एनुलर रिंग होता है, ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। अब इसकी 3-4 लेयर्स, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट व्हाट आर द लेयर्स ऑफ द walls of the heart? First is the endothelial layer, then comes the zona spongiosa, zona fibrosa, zona arterialis, ठीक है, easy to remember, spongiosa, fibrosa and arterialis, easy peasy. Next comes chordae tendineae. What is chordae tendineae? अब जो chordae tendineae होता है, ठीक है, it is made up of what? It is made up of collagen. It is between what? It connects papillary muscle and leaflets of walls. हर एक वॉल के अंदर लीफलेट्स होता है, ठीक है, लीफलेट्स होता है, इट कनेक्ट्स दैट, आई विल मार्क दैट इन द डायग्राम तो और अच्छे से समझ में आएगा। देन देयर इज पैपिलरी मसल। अब पैपिलरी मसल जो है वो बेसिकली प्रोजेक्शन होता है किसका, इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ मायोकार्डियम। मान लो ऑक्सीजन नहीं मिला पैपिलरी मसल को, मसल है ऑक्सीजन चाहिए तो क्या हो जाएगा, वीक, वीक हो जाएगा। तो पैपिलरी मसल जो है वो वॉल्व को पेटेंट रखता है, इफ अगर वीक हो गया तो वॉल्व क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। सो दैट विल मेक इट अ वनरेबल, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इट विल बी अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट विल कॉज वॉल्व रिगर्जिटेशन, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट मार्क दैट ऑन द डायग्राम, ठीक है। दिस इज नोन एज लीफलेट्स, दिस, ये क्या है आपका, लीफलेट्स ऑफ द वॉल। This is papillary muscle, which is a outsourcing, outpouching of myocardium. Okay. Then जो लीफलेट और इसको कनेक्ट कर रहा है दैट इज कॉर्डे टेंडेनी, कॉर्डे टेंडेनी। अगर मसल में कुछ प्रॉब्लम हुआ देन दिस वॉल्व्स नॉट विल नॉट फंक्शन। इफ अगर कॉर्डे टेंडेनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगेन it will hamper the functioning of the valves. Okay, coming back now, what are the functions of the valves? ठीक है, पहला तो ये बैक फ्लो प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो नहीं चाहिए हमें, क्या नहीं चाहिए हमें, बैक फ्लो नहीं चाहिए, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन यूनी डायरेक्शनल फ्लो, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा,
It also acts as an electrical insulator. Now what does that mean? हमारा जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है वो ऐसे डिजाइन है कि इट गोज फ्रॉम द एसए नोड टू द एवी नोड, देन इट गोज टू द बंडल ऑफ हिस एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो इंसुलेशन होता है, कंडक्शन जो एक्शन पोटेंशियल होता है, वो ऐसे ट्रांसफर नहीं होता, वो सिर्फ एक ही पाथ पे ट्रांसफर होता है फ्रॉम द एसए नोड टू द एवी नोड एंड देन फ्रॉम एवी नोड टू द बंडल ऑफ हिस एंड देन पुरकिंजे फाइबर्स एंड दैट, बट इट मेंटेन्स अदर देन ये पाथ के अलावा और कोई पाथ से कंडक्शन ना हो, सो इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. Okay, now what are the types of valves that exist? There are two types of valves. One valves exists between atria and ventricle. One valves exists between the trunks, the aorta and the uh, pulmonary trunk. So one type of valve is known as atrioventricular valve. Now atrioventricular valve किसके बीच में होगा? नाम से पता चलता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होगा, ठीक है. एंड देन देयर इज सेमील्यूनर valve. सेमील्यूनर valve ये किसके बीच में होगा? ये जो एग्जिट वेसल्स हैं, जो एग्जिट हो रहा है जिससे ब्लड, उसके अंदर जो वॉल्व्स होंगे वो होगा. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर कौन सा वॉल्व होता है, कौन सा ये होता है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है ट्राइकस्पिड. व्हाई इज इट नेम ट्राई? बिकॉज उसके 3 कस्प होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स ट्राइकस्पिड. एंड ये जो है वो बाइकस्पिड, ठीक है. How will you remember that? I often get confused. I used to get confused that right atrium is tricuspid and left atrium वाला जो है, जो left side है, वो bicuspid है. Always remember, if you have a group of 3 friends, that is always right. So right is always 3, ठीक है. And the bicuspid is always left. Okay. Bicuspid का एक और नाम है, that is mitral valve. Mitral valve, ठीक है. Okay. Now what are the two types of semilunar valves? अगर वो pulmonary trunk में आता है, then it is known as pulmonary semilunar valve. अगर aortic trunk में आता है, then it is known as aortic semilunar valve. ये pretty simple है, ठीक है. Now let's just mark that on the diagram. Okay. Now this is right side. Right side में 3 दोस्त होते हैं, 3 cusp होते हैं, ठीक है. 3 chordate tendini connected to the leaflet. What type of valve is this? This is tricuspid. Okay. Now 2 chordate tendini, 2 cusp, left side it is bicuspid. It is also known as what? Mitral. Okay. Now what is this? This is aorta, which bifurcates again into brachiocephalic trunk. Okay, brachiocephalic trunk, left common carotid artery. Okay, it again the ये also bifurcates. The brachiocephalic trunk also we will go in details of that when we will discuss coronary circulation. Okay, so we will discuss the heart supply of the heart and then we will discuss all the arteries जो related होती है. Okay, then here is pulmonary trunk. Now obviously this valve will be what? Pulmonary valve. This valve is what? Aortic valve. This is pulmonary semilunar valve. This is aortic semilunar valve. सिंपल, इजी पीजी, ठीक है. ये आपका यहाँ पर लेयर्स आएगा. अंदर ये मायोकार्ड, अंदर एंडोकार्डियम है, बाहर मायोकार्डियम है, इसके बाहर एपिकार्डियम है. यहाँ पर आपकी पेराइटल लेयर होगी जिसके अंदर आपका फ्लूइड होगा, ठीक है. So these are the valves of the heart. So this is all I wanted to discuss in today's session. At the end, there are some questions that might be helpful to review what we have discussed today. Okay. So the first question is, which of the following structure is a function are incorrectly paired? So SVC brings the structure from above the diaphragm. That is true. SVC ऊपर से लाता है, IVC नीचे से लाता है. Brings the blood from IVC brings the blood from below the diaphragm. Again true. Coronary sinus brings the blood from systemic circulation. No. So coronary sinus जो होता है वो आपका blood heart का blood लेके आता है. That is coronary sinus. Foramen oval brings blood from right atrium to left.
right atrium to the left atrium. Yes, it bypasses. So it bypasses, it happens in children, that is true. So the correct answer is this, coronary sinus. Then the next question, which of the following is not the layer of a heart? Which is the following is not the layer of the heart? Okay, I want you to answer that in the comment section. And the third question, which is the correct which of this is correct about mitral valve? Prevent backflow of the blood from atria to into ventricles. It has two leaflets. Bring the blood for LA from left ventricle to left atrium, called the tricuspid valve. कौन सा correct है? Mitral valve, a hint is mitral is on the left side. If it's on the left side, then you have your hint. Okay, so that's it for today's class. I hope you enjoyed the session, and the next lecture would probably be on conduction related to the heart and the properties of heart. Okay, thank you.